Mixed language, mixed. Okay, mixed. Okay. Good evening, everyone. This is Veer Maheshwar Charitable Trust Latur MS India organizing daily international webinar series. In this series, speakers are invited from India and abroad. This series is running from last 5 years, and we are enriching in the knowledge through the speeches by the various speakers on every day. In today's session on 18th May, we have invited Dr. Kanwaljit Kaur Madam, who is Assistant Professor at Central University of Punjab. And her topic is AI tools for reviewing a literature review. I welcome you, ma'am, from my organization and from all the participants. I also welcome all the participants, those who are joined here. As we are the researchers, and every time we need to write thesis or paper or a book, so we have to go through the literature review. At that time, the old method of literature review is quite time killing. So what the AI tools are introduced to review the literature review, we can learn from our today's speaker, Dr. Kanwaljit Kaur Madam. I welcome you, ma'am, and request you, you can start your speech now. Thank you. Thank you so much, sir, to providing me that opportunity to interact with the like-minded peoples who want to learn. So, literature review is that is a very backbone of for the researcher. एक आजकल इतनी सारी पब्लिकेशंस हो गई हैं कि आपको कहीं ना कहीं उसको समराइज करने के लिए चाहिए. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन्युअली, क्योंकि मुझे पता है कि 5 years और 10 years बैक जब लिटरेचर रिव्यू हम बाय मैनुअल करते, मैनुअल मीन्स वी आर सर्चिंग ऑन द डाटाबेसेस, वी एक्सट्रैक्ट द डाटा, वी रेड सो मेनी थिंग्स, समटाइम्स वी वेस्टेड आवर एनर्जी on that papers which are not very much useful to us. So AI tools can help us to save our energy. See, it is not replacing us. Actually, it is very supporting hand for us. For example, if someone is listening to me, could I ask you one question? Which tool you are using nowadays for reviewing the literature, so that I can move forward? Which tool you are using for literature review or reviewing of literature? Anyone? Okay, no one. So I will tell you, today I want to discuss the 4 AI tool. That one is our Perplexity, Elicit, Notebook, LM, and at Cafe. And if time permit, I will show you more AI tool. But why we need that AI tool? Because knowledge is expanding, but we have a very limited time, and we have to be justify our research gap. We have to read so many papers. It's not possible manually, because if you want to be read manually, or if you want to check whether it is in my inclusion criteria or exclusion criteria, it's waste a lot of time. So I am discussing with the 4 tools, or I always give you one की पॉइंट्स हेयर कि नो सिंगल एआई टूल डज एवरीथिंग. मतलब हर एक एआई टूल आपको सब कुछ नहीं देगा, इसलिए हर एक टूल की अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना लिमिटेशन है. तो इन दिस 30 minutes लेक्चर आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस एआई टूल में क्या है और इस टूल में क्या नहीं है, कौन सा टूल आपको कब यूज करना है. इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि इस करंट टॉपिक पे क्या चीजें हैं. If you want to understand the concepts only, then Perplexity AI is a wonderful tool for you. But if you want to rigorously literature review and scientific evidence synthesis, if you want, so Elicit is the one of the best tool. If you want to convert your enriched material into something teaching material, so AdCafe is very, very good. But if you want to read some PDF, so Notebook LM is one of the best option among the all AI tools. Perplexity AI, I will show you how you can use.
Illicit, I will show you. I will give you a demonstration how you can use Perplexity A, Illicit, Notebook, LM at Cafe. But one thing you remember, if you want to the surface, only you explore the concept, use Perplexity. अगर आपको बहुत deeper जाना है उस topic के अंदर, you want to explore more and more the illicit, Notebook, LM, आपके पास कोई PDF है, वो PDF को upload कीजिए and then discuss your points with that PDF. आप उससे बात कर सकते हैं कि if you want, I will show you. So if you want to understand the topic or you want to just interact with that PDF, then Notebook LM is one of the best option. Ad Cafe है कि आपको teaching material में इसको convert करना है, तो Ad Cafe is one of the best option for you. So I will start with the Perplexity AI. I will show you here. I hope this will work. See, what you need to do this, go Google Perplexity AI. So my screen is visible? Screen is visible? Yes, yes. Okay. So this is a Perplexity. Could you ask me any question? How you can use Perplexity? I will give you demonstration. Give me any question, any topic. कोई भी topic आप बताइए जिसको आप explore करना चाहते हो. Any topic. Let's start. Perception of teachers on NEP 2020. So I have written there. So यहाँ पे आपको क्या आ गया? Teachers के point of view यहाँ पर Perplexity में आपको दिख गया. Main teachers view, many teachers see NEP 2020 as a forward-looking reform that can improve education quality and learner outcomes. Teacher often areas such as multidisciplinary learning, regional language use, and stronger professional development. These are the core concept. कि इसके बारे में teacher perception क्या है? Generally positive. ठीक है. So this gives us very surface knowledge. ठीक है. If you want to follow up questions like this is a very ready-made follow-up question. Compare teacher sentiment across regions and levels, a dashboard of implementation barriers and support gaps. Build a policy impact simulation. I need this turned into concise assignment answer for my class. Could you draft it as a comprehensive seminar note presentation? If I click just here, you see this make my seminar note presentation. Title, introduction, meaning of perception, main feature of NEP 2020, positive teacher perception, area of the concern, research finding, factor influencing perception, implications for education, suggestion. See, so this whole give us the concept. मतलब अगर आपको concept को explore करना है, it is very good tool to use Perplexity AI. Now I give you one alternative of this. If you यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? NEP 2020 पे बोल रहे हैं, they're very positive impact. अभी मैं आपको इसमें comparison करके दिखाती हूँ. Now you have to use illicit. Illicit AI. यहाँ पर mention भी किया हुआ है, illicit you can use for the scientific research. It open. अब यहीं पर मुझे फाइन पेपर्स करने हैं. Perception of a teacher on NEP 2020. Now, see.
देख रहे हो कि यहाँ पर हमें परसेप्शन ऑफ टीचर एंड एनईपी, यहाँ पर आ गया इवेल्युएटिंग एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव्स और एनईपी थ्रू 20 बिकॉज ऑफ नेट इशू, नेटवर्क इशू यहाँ पर नहीं आ रहा है. देखो समरी आपके सामने है. Educators show a positive attitude toward NEP 220 but face challenges in implementation based on data from 200 educators using structural analysis techniques. This is one paper. अब कितने पेपर हमारे पास, जितने पेपर NEP 220 पे हैं, that give us very scientific base. Perceptual clarity of student teachers about National Education Policy 2020. Teachers have very low awareness about NEP. This is a summary of the whole the paper. You can see. And if you want to chat with the paper, like teachers generally hold positive perception of NEP 2020 but express significant concerns about the implementation readiness and support system. Across 10 studies, itne educated teacher support and positive findings are substantial, like R. Patel, this. However, implementation concerns equally consider only 40% felt adequately. तो ये जो पूरा summarized version है, और that is a base. See, यहाँ पर citation है R. Patel 2026. 77.5% of CBSE teachers demonstrate awareness of NEP goals, and 305 teachers show strong consensus on the NEP multidisciplinary approach. A 200 educator study found positive attitude and readiness to adapt. So see, this is the whole summary of the 10 sources. I have only the I don't have a pro. If you upgrade, the more paper will come and you more summarized version is here with you. If you want to chat with the papers, I can write which methodology they have used in the paper. See. If I want to know about which methodology they are using in the papers, though it will show the papers implies diverse methodology to study teacher perception of NEP 220. Quantitative approaches, यहाँ पर ये quantitative approaches use की गई हैं. इस पेपर में mixed method approach use की गई है. Qualitative approach use की है. Statistical analysis methods they have used. So it gives us a very summarized version of this. ठीक है, तो this is whole about the suppose if you want to add a column, you can add a column too. Column name अगर मैं चाहती हूँ, I want to add one column on the key points. Instructions, what kind of data you want to extract, like sample or methodology. अब मुझे समरी नहीं चाहिए, मुझे ये भी जानना है कि उसमें कितने सैंपल हैं, कितने मेथोडोलॉजी यूज की गई है. तो आई कैन जस्ट ऐड द कॉलम पार्ट एंड इट इज गोइंग टू ऐड, और जो मुझे चाहिए वो पेपर से निकल के आ जाएगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इलिसिट कि आपके पास यहाँ पर आप जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन, इट इज विद यू. आपको जैसे अगर एक पेपर रीड करना होता था, तो मुझे लगता है कि एक पेपर रीड करने में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम 35-40 मिनट्स लगते हैं. और हेयर वी हैव एवरीथिंग इन जस्ट 5 मिनट्स. यू कैन रीड कि अच्छा ये वाला स्टडी ये बोला, ये स्टडी है. अगर आपको लगता है कि दैट स्टडी इज रेलिवेंट, और जैसे अभी देखो मैंने सैंपल लिखा और यहाँ पे मेरे पास सैंपल आ गया सबके सामने कि इस वाले पेपर में 200 सैंपल. सो यहाँ पर कॉलेज टीचर्स ऑफ सदर्न केरला पर सैंपल इज नॉट मेंशन. 40 फैकल्टीज, ठीक है. यहाँ पर फुल मेथड स्टडी फोकस टीचर परसेप्शन टुवर्ड्स अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच, ये सैंपल साइज, फोकस स्टेजेस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कौन सी यूज की है. तो इट गिव्स अ होल समरी ऑफ द पेपर्स. 10 सोर्सेज है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए 10 पेपर्स का पढ़ने का मतलब है कि मेरे लिए एक दिन पूरा लग जाता है. इफ आई एम वेरी मच फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन. पर यहाँ पे मुझे लग रहा है हार्डली 5 मिनट्स में मेरे पास एक समरी आ चुकी है और मुझे जो जानना है वो मेरे पास है. एंड यू कैन शेयर दैट होल द डाटा एंड एक्सपोर्ट एंड सेव इट. You can save it very easily. If you would want to that filters कैसे लगा सकते हैं कि मुझे सब सिंपल लेटेस्ट पब्लिकेशन चाहिए, जैसे 2020 to 25. तो you can here mention the publication date. Journal quality, you want only the high quality papers Q1, Q2 या फिर all.
कौन सी सिर्फ रिव्यू और मेटा एनालिसिस चाहिए, जस्ट यू अप्लाई हियर and you get the paper whatever you want. So you can see the difference between the perplexity and AI. Perplexity, हमने सिर्फ perplexity में भी यही prompt डाला था, perception of teachers on NEP 2020. तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक information मिली थी overall कि ये that is positive है, but there is no citation, no scientific evidence. If you see, it's lack in scientific evidence. Even we have given instruction कि seminar note के हिसाब से लिखो, तो they make a slides point. Any question? Any question? Okay. Illicit, you can show this is a base on totally scientific base. Scientific base. Everything, there's a paper, what paper told, and you can add so many columns, whatever you want to extract, but you have a very clear in mind what you want to know through this paper. So that should be there. See, but this is a very scientific base. Now I will show you. Where's my slide? Yes. So I have given you a demonstration of perplexity and illicit. See, यहाँ पर clearly mention है कि perplexity AI is used for the exploration and the illicit is we are using for the synthesize the or using for the rigorous literature review. Perplexity की strength क्या है? बहुत quick overview होता है that we have discussed. Web access है, it's like a Google. Perplexity is like a Google में हम सब देखते हैं ना, ये सब चीज का क्या है पॉइंट, ये क्या है, तो that is a हाँ, every claim is linked to citation for verification, that is mentioned. मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर source transparency है perplexity में. See, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर sources there mentioned, academic journal, Synatos, ARDD, TD++, Acetana, these are all the strengths. और next वो बोल रहे हैं multimodal assess, yes, model they are using. Critical limitation I have told you कि not deep reading है. इसमें source की risk रहता है कि जो source ये बोल रहे हैं exactly that is right or not, or it's good for breadth. If you want to understand the concept through the multiple perspective, then you can use perplexity A. Or yes, teacher educator uses a initial reading list test, जैसे seminar के notes बना सकते हैं हम इसमें, so that is good for that purpose, perplexity AI. And illicit अगर आप देखोगे तो 80% that is 80% time saving है, screening recall है, extraction accuracy 94% है. Perplexity में ये less है. और कितने पेपर 138 बिलियन पेपर्स इसमें आप मिल जाते हैं इसमें, तो इट्स ह्यूज 138 मिलियन. ह्यूमन ओवरसाइट रिक्वायर्ड, जैसे मैंने बोला कि कैन एक्सट्रैक्ट डाटा बट ह्यूमन मस्ट इंटरप्रेट मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप yes, illicit, which method you use, quantitative approach, qualitative approach, that we have to be neat कि अच्छा mixed method approaches ये use हो रहे, तो what is the why they more focus on the quantitative approach, which approach we need to be done, that should be human oversight. यहाँ पर बोला गया कि जो illicit आप use कर रहे हो, inclusion criteria बहुत अच्छे से mention होना चाहिए. I have told you कि आपको क्या चाहिए, आपको सैंपल चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए, समरी चाहिए, और यू वांट टू फोकस मोर ऑन द व्हाट टाइप ऑफ टूल्स दे आर यूजिंग, तो यू शुड बी वेरी मच फोकस ऑन दैट. तो इंक्लूजन क्राइटेरिया आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए. हाँ, एक ये चीज है कि यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शंस आती है मेनली फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट्स और ओपन एसेस, जिसका ओपन एसेस नहीं है तो इलिसिट उसको नहीं ले पाता. वो अगर होगा आपको प्रो लेना होगा. मुझे लग रहा है ये जो सिंपल वाला है हमारे पास बेसिक जो फीचर है वो उसमें नहीं है. ठीक है,
तो ये सुपरविजन में रिव्यू पेपर्स, एविडेंस मैपिंग में दैट इज वेरी मच हेल्पफुल इलिसिट. नोटबुक एलएलएम में क्या होगा, आपको ऑडियो वीडियो समरीज मिल जाती है. मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे. विजुअल एड्स लर्निंग टूल्स, आई विल शो यू हियर नोटबुक एलएलएम. Yes. That is Google Notebook LM. Mhm. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मैं रिसेंटली कोई सेटिंग में जाऊँ, क्रिएट न्यू, आई एम क्रिएटिंग माई न्यू नोटबुक. Create audio and video over if I want to upload one file, so I can upload one file like desktop में. Uploading one paper. Okay, let's start with this paper. I uploaded one paper. It's on the publication stage क्योंकि मुझे अभी एक PDF मिल नहीं रहा था, तो I just uploaded this and see. अब मुझे क्या करना है, मैंने ये अपलोड कर दिया, तो there is summarized version here. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ऑडियो ओवरव्यू टू सी. इसको थोड़ा टाइम लगता है जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू से, पर इट विल शो यू. इन द मीन टाइम, इफ यू वांट टू इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप आई विल शो. इफ यू वांट टू कि आपको ये पेपर समझना है पर आपको ज़्यादा चीज़ें विजुअल से समझ आती हैं, तो आप जस्ट गो एंड जस्ट क्लिक ऑन द माइंड मैप. You will see it will generate. If I want to be video overview, so it will generate video also. Brief, auto select, custom, whiteboard, generate. It will take time, but it will show you. I will show you how it will work. Yeah. See, तो दिस इज नोटबुक एलएम. यहाँ पर आप देखो विजुअल एड्स, लर्निंग टूल्स, वो जो माइंड मैप्स बन रहे हैं, दैट इज कैन बी यूज एज ए लर्निंग टूल्स. इसमें प्रॉब्लम क्या है, फ्री में तो आपको 100 नोटबुक्स, 50 सोर्सेज नोटबुक, 50 क्वेरीज पर डे मिल जाएंगी, पर मीडिया लिमिट है, 3 ऑडियो, 1 वीडियो मिलेगी. प्रीमियम में आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तब इतना होगा. तो लिमिटेशन क्या, आउटपुट क्वालिटी डिपेंड ऑन सोर्स क्वालिटी. जैसे मैंने अभी ये पेपर डाला है, दैट इज अंडर रिव्यू, तो अभी ये पब्लिश नहीं है, तो इट्स नॉट ए रिफाइंड पेपर. तो रिफाइंड पेपर से मुझे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. बट इफ आई अपलोडेड वेरी गुड सोर्स, तो डेफिनेटली आउटपुट विल बी बेटर. तो आप क्या कर सकते हो, लेक्चर प्रिपरेशन कर सकते हो इससे, पॉलिसी एनालिसिस, स्टडी गाइड्स. तो दिस इज द होल द बेनिफिट ऑफ द नोटबुक एलएम. नेक्स्ट इज योर at cafe. I will show you at cafe too. अच्छा देखो, ये अभी माइंड मैप बन गया, तो जस्ट क्लिक ऑन इट. अब इसका माइंड मैप देखना इस पेपर से कैसे बना है. तो दिस इज द होल पेपर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड एकेडमिक सक्सेस. तो कोर एग्जीक्यूटिव फंक्शन कंपोनेंट्स,
these cognitive flexibility, working memory, inhibition control, impact on the academic areas, mathematics, reading, and literacy. Actually, this is a summarized version. Clinical factors, psychological barriers, educational outcomes, research and management, systematic review, details, assessment tools. So these are all the mind maps uh, that you give you the whole picture. So no, I don't want to expand. You can download it here, but I don't need now. So, I just put it into that form. Yes. So this is a whole mind map. This is a whole mind map. If you expand it, you get the whole mind map. कि what is the paper about it? जैसे inhibition control, या आगे आगे going systematic review details, assessment tools. So whole detail you will get. It's a good content. Yeah. Answer, but I don't. Yes. Tree, tree. I cross the view. Now अभी भी वीडियो अभी एनालाइज हो रही है, ऑडियो एनालाइज हो रही है. इन द मीन टाइम आई विल शो यू एट कैफे. At cafe. At cafe. This is specifically a dedicated task for the developing real classroom practices. AI slide generator. So, okay, we can make a PowerPoint presentation from this. I need to sign up. जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ, अगर आप भी अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा. तो create new, yes. Chatbot queues, YouTube queues, assignment grader, reading activity flashcards. So we move into the teaching resources, summary notes, lesson plan. Okay, lesson plan. Okay, this is a great lesson plan. So suppose I want to teach my students scale of measurement. Now I want to based on 5E constructivism approach. So this is the whole lesson plan that developed. Vocabulary, essential questions, lesson procedure, explore. 5E में ये points होते हैं ना, how do you engage, how you explore, explain, elaborate, evaluate, extension activities. These are the assessment, summative, homework. So everything is there. So it's a very ready-made material, but you have to deliver. You focus on how we can deliver this content to the students. So that is the beauty of Ed Cafe. Now we can go back. Yeah, we don't need to be safe. Go back. Okay. So if I want to generate teaching resources,
Teacher, what topic you are going to teach? So I want to teach like scale of measurements. And just I click on it. Okay, that needs a worksheet. No, we don't videos. We want only videos. Slider articles that need upgradations, but we can have a tutorial. A tutorial on how you can use at cafe. They make one YouTube and back quiz. Yes, quiz on topic like on scale of measurement. So multiple choice question, generate cues. You can give additional instructions as you want. Your MCQ should be. So this is a whole quiz for you specifically on the topic of the scale of measurement. So it's a ready-made material for the teachers with the explanation. More you interact, more you learn with these tools. Ek minute. Let me. Yes, I want to show that illicit. Yes, illicit. If it is generated, acha. It generated till now. It's generating audio, it's generating video, but it can generate infographic, very beautiful infographic from these tools. But it take time, little bit time. But otherwise, it is fine. If you wait, you get very good infographic and all these things. So I just want to compare what is a primary goal. If you want to explore a new topic, use perplexity. If you want a rigorous literature review, use elicit. If you understand your own document, if you want to interact with your own document, use notebook LM. If you want to create teaching material, then you can use at cafe. So this is the comparison at very glance that we have already discussed. But if you go through my PPT, you will get to know okay what are exactly these are things. So a week in life, you can get a very good making material for your students. So that tool you can use, but ethical, rigorous, responsibility should be there before using that resources. Please recheck it, whether they are right cited the sources or not, and they reflect what thing should be done and what thing not should be done. Because at the end, human insight is very much needed. So by verify, reflect, and use that any model that suit to you, it will be very helpful for you. So that's from my side. There's more other tools too, like size space is also there, consensus is also there. There's one other tool is illicit is also very one wonderful tool. Julius is one also very good tool for the research writing purpose. But use for the language part, use for the literature review, but use your insight while using these type of by using that type of AI. That is from my side. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for your effective and useful. Also, at the same time, because the practical session also, we learned so many tools which are used for review the literature. We request participants they can unmute. Yes, they can ask questions, sir, if they want. Sorry, I forgot to ask about the queries. If you have any queries, please ask. I'm ready to answer. I request participants to unmute and discuss on today's topic. Yes, sir. Shukla, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Good evening, Dr. Betkar, sir. Good evening, ma'am. Wonderful presentation you have made, and you made it very easy for us. When it seems to be easy for me, means you have really placed the subject in a right fashion, right way in front of us. And perplexity, illicit, LM notebook, and then you have talked. Last one is At um, cafe. uh, At cafe. it, EDCAFE. Yes. right. So LM notebook I heard about, perplexity I heard about, but I was not knowing illicit, and it is giving such a wonderful citation, and the theme, the summarization is also there. So I think that is a really helpful for what we are going for review of literature. So, and we can find out the right content, because review of literature, as you said, it is a backbone or it is a foundation of any research. So, in fact, the research starts with the ROL. So, what is existing, what is happening, and then what we can do innovative or novel, in future. That is what we can go for. So, we get a guidelines direction from the ROL. And what you said correctly, we used to go to books and the reference books, and then the on the Google and Chat GPT, it takes really a lot of time, and then we have to read, the whole thing. And whether it is in context of my subject or no, we have to match that. That is all that is how we were going for. But now I think it is very easy, and the practical way you have shown us, right, how to use it. So we will explore it further, Yes. definitely, and we will use it in our practice. Unless and until we are not using it, we will not come to know the all facets of this. At least we got idea that there is a such a kind of tools or apps are available and which can help us in our ROI. So thank you very much. The last point, what you said, the real discrimination is with the human mind only. So whenever we are, dealing with all these apps, at the end we have to go for, our own logic, rational thinking, and that is our knowledge we have to use, and then only we can accept it or not accept it. So that is also well said. Many of the time it happens, the irrelevant information also appears. In ChatGPT, we used to get references which are not at all related to the country. Yes, very true, sir. So I think illicit will help us. That is a real solution for us. Because this is, I have shown that illicit accuracy is 94%. So we can rely, but not totally, but we can rely on the illicit because its accuracy is very good as compared to other AI tools. Correct. So I think illicit we can go with this. So today only I will be sitting in the night time and I'll be playing it with 1 hour, and then that is how I think I'll become a master of the use of this illicit. So thank you very much for your wonderful practical oriented webinar, what we can say, and thanks to Dr. Betkar sir. My very important question is, we are having our PG scholars. I'm from the medical field. And these people are using these tools. When they're using it, you said that where to use perplexity and where to use illicit, and how they are, what are their potentials. Uh, is there any tool, that will help, by giving something like, markers in the cancer or, identification? So if we are giving it, so whether it will collect all international, national, all journals together, or it will be, limited to something. That is my question. Thank you. Thank you so much, sir, for giving me such a very that a very good point of view on the AI tools. But my answer is to your question is that it depend on what type of subscription you are taking. For example, if you have seen my presentation, illicit is a 138 billion journal papers are there, or there is a filtration also, okay, which quality Q1, Q2, Q3,
Q4, they are filtered, but they are paid subscription. If your institution are focused more on they have to use AI tool, so you have to take the subscription. Like in basic illicit, you are just searching with the very basic models. If you are moving to the pro model, so the Chat GPT 5.0 model, Claude model, so they are very upgraded. But problem is with the AIT tool, they are paid tools. In free, you will get the basic 10 sources, 120 sources. But in the pro subscription, you are getting more searching in the depth searching. There's a deep search engine is there in the illicit also. But in the pro. But it will Correct. give you all the overview. Yeah. Yes. So we have to purchase. Yeah. And approximately what is the cost of, if suppose I'm going with illicit pro? So what is the cost for that? I have mentioned this in my presentation. Yeah. It costs. So I'm not promoting illicit models, but still I'm telling you the cost. Cost is approximate. Illicit Pro is $12 per month. Per month. Per month, yes. Okay. So can multiple users can use it at institutional level, but Institution level, yes. people use it. So one Yes, person at one time only. Huh. Okay. Thank you, ma'am. Wonderful explanation. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Sanand Shukla, sir. With your discussion, we get more points with this speech also. And the various tools you can try as per your institute, so they can be used for your research, for your students, and for your students. Thank you, sir. If anyone want to discuss, they can unmute. हमारी आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ सर, मैम एक बात जानना चाहता हूँ, AI उपकरण के माध्यम से क्या हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा का तक क्षेत्रीय भाषा के रिसर्च पेपर को भी अति किया जा सकता है, जर्नल पर भी काम किया जा सकता पर हो सकता है AI के माध्यम से, या फिर अंग्रेजी भाषा तक ही सीमित है? आप एक काम कर सकते हो कि जो ये समरी आएगी ना, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो आप हिंदी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर्स जो Q1 में Q2 में मोस्टली अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दैट इज अ प्रॉब्लम. रीजनल लैंग्वेज में हमारे पास पेपर्स बहुत कम है, और इवन देयर मॉडल इज नॉट गोइंग इनटू दैट डेप्थ कि वो रीजनल लेवल पे लेके आ जाए. पर यू कैन ट्रांसलेट दैट रिसर्च समरी इनटू योर रीजनल लैंग्वेज. आप कर सकते हो, हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हो. क्योंकि हम एज ए रिसर्चर ना, हम कभी भी रीजनल में नहीं सोचते हैं, हम ग्लोबली सोचते हैं. तो वट एवर इट इज, वी हैव टू टेक इट, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इन एनी लैंग्वेज. आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. बहुत अच्छा लगा. और AI से सबसे बड़ी बात है कि जो विषय भी है आज का, जो साहित्य से संबंधित जुड़ाव था, और उसके उपकरण पर AI पर बातें होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साहित्य के प्रति तो अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों का लगाव, जो रुझान है यंग जनरेशन का, बहुत कम हुआ है. और दूसरे पक्ष ये भी है कि लोग बढ़े भी हैं, जब से टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है उस पर बढ़े भी हैं लोग. मगर जो रुझान है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉपी ज्यादा होने लग गए हैं साहित्य से संबंधित, और जो चीजें हैं चुरा करके लोग यूज कर रहे हैं. तो उन्हें तो ये लगता है कि वो पकड़ में नहीं आएंगे, मगर ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी बना दिए गए हैं कि आप कहीं ना कहीं जाकर एक बार फंसेंगे जरूर. कॉपी का भी एक अपना एक सीमा होता है, मगर जब ऐसे चर्चाएं होती हैं तो बहुत सारी बातें जानने को भी मिल जाती हैं, और इससे बचने का भी मौका मिलता है. और दूसरी चीज, जब AI टूल्स से जब हम लोग खबरें भी बनाते हैं तो वो पकड़ में आ जाती है कि वो खबर AI से बनाई गई है. मगर जब अपना खुद का अगर AI से मैंने बनाया भी, तो मैं उसे पढ़कर खुद भी बनाकर हेडलाइन चेंज करके बीच में कुछ अपना भी बना करके डालेंगे तो कॉपी वो नहीं बताएगा. मगर आप जैसे ही मतलब एक ही चीज को कॉपी पेस्ट के चक्कर में रहेंगे डायरेक्ट रूप से, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो बता देता है कि कहीं ना कहीं आप लगातार कॉपी कर रहे हैं. और ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है, क्योंकि बालेंदु जी जो है, ये इस पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम किए हैं बालेंदु सर. तो वो उनके माध्यम से भी हम लोग को बहुत सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से जानकारी मिल जाता है.
बाकी आपने जो प्रेजेंटेशन दिया मैम, वाकई में बहुत यूजफुल था। और मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्षेत्रीय भाषा पे काम करते हैं। जैसे देखिए हमारे बेतकर सर महाराष्ट्र के हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में, मराठी भाषा में शायद पर कई सारे लोग हैं जो काम करने वाले हैं। तो ऐसे में एआई का उपकरण का उपयोग करते हुए हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगफुल होगा। इसीलिए मैंने आपसे भाषा संबंधित बातों को मैंने जानना चाहा। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पत्रकार हूँ, और इस लहजे से मैं एक बात तो जरूर बोलता हूँ कि अगर आप साहित्य को समझ जाएंगे ना, तो अच्छे से पत्रकारिता भी करना सीख जाएंगे। अगर आपने साहित्य को नहीं समझा तो सही से पत्रकारिता, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साहित्य से जुड़ाव बहुत जरूरी है। हमारे बिहार में भी बहुत सारे गांव कस्बे में ऐसे लोग हैं जो लघु कथा लिखते हैं, पोएट लिखते हैं बच्चे, मगर उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां वो दिखा सकें, वो लिख सकें, लिख कर भेज सकें। उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो ऐसे में वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो मगर ये जो उपकरण आया है एआई, हम लोग को बहुत बड़ा एक अवसर भी दिया है और रोजगार का कई अवसर भी खोल दिया है। तो आपका जो विषय था काफी इंफॉर्मेटिव था। कम समय में आपने बहुत सारी बातें समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सोनू कुमार जी। रीजनल भाषा में एआई कैसे यूज हो सकता है रिसर्च के लिए, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ रेज किया है। और उसके ऊपर मैडम ने बहुत अच्छा समाधानकारक आंसर दिया है कि आप ट्रांसलेट करके आप सर्च कर सकते हैं कि इस विषय के कितने पेपर आते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, If sir. anyone want to discuss on today's topic, they can discuss. I think. So thank you Hello, ma'am, very good evening. for accepting our invitation. Very good evening, ma'am. Good evening, sir. How can we find the connected paper for our literature work? Connected paper. Suppose we have decided the topic. Now we want to find the connected papers. Research rabbit, sir. I think for that your question, a research rabbit is the one of the. It will help you for using the dotted to join your dots in research gap. So research rabbit you can use. Okay, ma'am. Thank you. Have you used that tool? No, Research Rabbit. No. Use that tool, Research Rabbit. Is that free, ma'am? Means it's free. Initially it is giving how many in free? 10, 20 resources? It's free. For it will give you so connected maps. Which author work on that your area, so you can use, because I don't have a time. Otherwise, I will show you how you can use Right. Research Rabbit. Okay, right. I'll try to make it. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Lakshmi Shankar sir. He was also the invited speaker of this series. So speakers also joining again and again, and they are connected to this series. It's very proud thing is that once they have finished their speech, they should not detach from our academic activity. So I request all the speakers, they can encourage to join others, also to encourage to join their students, research scholars, and teachers as a speaker. Thank you, ma'am, again for accepting our invitation and delivering a best useful speech for us. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope it will helpful for you and you will implement it. Thank you. Yeah, very, very. Thank you.